Hi, welcome to the official channel of Sagar College of Science, Balasore. As you all know, my name is Indra Das. Hope you all might be doing well at your home. Stay safe, stay at home because the rise of corona is like at its highest peak right now. So coming to my session, last class, I have discussed with you the poem called Stopping by the Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. So as I promised in the last class that today I will be discussing the question answer of this poetry. So I request you people to take out your book and take out page number, I guess it is 102, take out page number 102. You could be able to see the questions. Today I will be discussing around 6 to 7 questions. Rest I will be discussing in the next session. So please I request you to pay attention. So students, let us begin with the question answer. So number one question is, look at it, look into your books. The question number one is, how is the woods different from forest? A question ro mane kono? Amuku pacharuchanti kono? Kemiti woods ta forest tharu bhinno. So check out the first question answer. So now I am going to explain. Kono thila amaro question? Amaro question thila, how is woods different from forest? Meaning kemiti woods ta forest tharu different. Bhinnata kon achi? What is the difference? So listen to me very carefully. Kon mu lekhili? Woods is a patch of land. Patch mane gute small plot. Okay? Woods is a patch of land with large dense covering of trees. Woods ta gute plot, man it is a kind of plot. Jemti jommi badi re gute chotiya plot ame kiniya ku jau dekhithibo tama bappa ma kiniya ku dekhiya ku janti. Gute small patch of land with huge number of trees. Okay, now there can be human habitation or life nearby. Kono woods ro akha pakhi re kono life mane jibona au habitation. Habitation means kono life au livelihood. Mane animals, plants, human beings can take life and can take shelter nearby. Kaha pakhre? Woods pakhre. Okay, now coming to the difference. What? But means now we are going to tell about the forest. But what? But forest is a huge or very vast patch of land densely covered by big trees and bushes. Means what? Listen to me very carefully. Like woods is a small plot of land which is covered with densely trees and there can be habitation or life nearby. But forest kona? Forest ediki chuta nuhe plot. Forest is a big area. It is a big plot of what? It is a big plot of land which is densely covered by big trees and bushes. So I hope you are getting the point. Mu jaha kahili ta mane ta I hope tame bujhi pacho. Eita hochi question number 1 ro answer. Question number 1 kon thila? How is the woods different from forest? Okay, now students, so coming to the second question. What is the second question? Look into your books. The second question is, where does the rider stop? Yaro mane kono? Rider kiye amore ethi?
जी वुड्स थ्रू पास करते घोड़ा उपर बसिकी कौन कहते वेयर डज द राइडर स्टॉप सी को जगार छिड़ा होते सो बेसिकली मुझे तुमको लास्ट सेशन रे कही कौन जे +2 फर्स्ट ईयर रे सब डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े सो दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन which is only having one line answer. So the answer is से ट्रैवल करथले कोठी ताको डेस्टिनेशन रे से ट्रैवल करथले ट्रैवल करला बेले से को जगह रही कि मेस्मराइज हे जितले तारो लोकेशन टा एग्जैक्टली ए क्वेश्चन रे पचाची क्वेश्चन टा कोन वेयर डज द राइडर स्टॉप्ड सो द राइडर स्टॉप्ड बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक से वुड्स आ फ्रोजन लेक जे लेक टा कंप्लीटली फ्रोजन हे जाइतला तारो मझी मझी रे हम राइडर छिड़ा हेथिले ओके स्टूडेंट्स सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ठीक है देखो बही रे कोन लिखा हिची why does he stop so what is the meaning of this question and first of all what is the meaning of he who is he over here he is our poet the rider the traveler he was traveling he was riding over his horse where he was traveling towards his destination and here the question is what why does he stop se kahi ki sei jaga re chida he ki mugdha he jaithile so the answer is snowy forest in that evening full stop he felt charmed watching the serene beauty of the woods so what was our question was why does he stop he is who he is the poet why he is stopping over there at a particular place of the forest why the reason is been asked in this question so mu kon kahili he stopped to admire the beauty of the snowy forest in that evening se particular jaga re chida hai ki snowy evening ro दृश्य टाकू फील करके मेस्मराइज जे हे जाइतिले पूरा मुग्ध हे जाइतिले से जिंसटा टाकू से एडमायर माने निजे निजे मने मने ताकू भलो कहिबारे पूरा व्यस्त हे जाइतिले तापरे कोन लिखिली he felt charmed watching the serene beauty of the वुड्स सी मिते पूरा आश्चर्य हे जाइतले वुड्स रो ब्यूटी को देखि कि से पूरा अलगा गुटे दुनिया रे चली जाइतले से पूरा चार्मिंग आमे चार्मिंग काहा को कहू गुटे रेड रोज को आमे जनरली चार्मिंग कहिता इट इज द साइन ऑफ charm why because it is so beautiful that one is unable to explain that why is the red rose beautiful similarly आमर पोएट रो कोन हेतला से जागा रे नेचर रो सीरीन ब्यूटी को वुड्स रो सीरीन ब्यूटी को देखि कि सीरीन माने अत्यधिक सुंदर ब्यूटी को देखि कि से पूरा मुग्ध हो जाइतले से समय he was totally gone into a different world okay students so coming to the fourth question just look out what is the fourth question the fourth question is he will not see me stopping here what does this expression mean so basically it is an expression which is drawn from the poem and the poet is asking you the question that he will not see me stopping here eti he ta
किए बोली सी पचारुचंती. So the answer is students, so what I wrote he refers to the owner of the woods who is staying by the jungle nearby. He is not going to see the poet standing in the woods. So now explain करूची ध्यान से सुनिबो. So the meaning of this answer is एठे हमको किए पचरची क्वेश्चन टा कोन पचरची he will not see me stopping here. ए लाइन रो माने हमको पचरची आमे कोन लिखिलु he refers to the owner of the woods. he किए owner of the woods जहार woods through रो हमर पोएट जाउथिले आ सेई जगह रे से छिडाई की सीनरी टा को एन्जॉय करथले. से जगह टा कहारो से ओनर ऑफ द वुड्स से कोठे रहउथला द ओनर ऑफ द वुड्स हु वाज स्टेइंग बाय द जंगल नियर बाय. से पाखा पाखी अंचल रो जंगल भितरे स्टे करूथला. तापरे कोन कहिची he is not going to see the poet standing in the woods. एटी he किए he होची हमर ओनर ऑफ द वुड्स देखि परिबनी जे हम पोएट सेई जगह रे छिडाई की केमिति तार एरिया रो सीनरी टा को एन्जॉय करछोंती. सो ओवरऑल द मीनिंग इज व्हाट the meaning is he refers to the owner of the woods. he एठी होची हमर ओनर ऑफ द वुड्स जहार एरिया थ्रू रु हमर पोएट पास करूथिले आ पूरा मेस्मराइज हे जाइतले पूरा एन्जॉय करूथिले तांकर से वुड्स रो सीनरी को. तापरे कोन लिखली द ओनर ऑफ द वुड्स हु इज स्टेइंग इन द जंगल नियर बाय. एठी मु लोकेशन पे मेंशन कर देली जे लोकर वुड्स थ्रू रु हमर पोएट पास करूथिले से कोठ रहउथिले से रहउथिले गुटे जंगल आखापाखी जंगल पाखापाखी रे. तापरे लास्ट लाइन मु कोन लिखली he is not going to see the woods he is not going to see the poet standing in the woods. he किए से ओनर ऑफ द वुड्स से किंतु जानि परिबनी जे मो वुड्स ता जण को एते एन्जॉय फील करूची किंतु हम पोएट से जगह रे छिडा है कि एन्जॉय करूचंती. Okay, now students, coming to our fifth question, see the question very carefully. The question is, why does the horse gives his harness bell a shake? ए क्वेश्चन नो माने कोन आमे कोन पढिथिले हॉर्स पूरा ताज्जुब हे जाइतला. हॉर्स टोटल कंफ्यूज हे जाइतला जे काहे की तार ओनर माने हम पोएट ए जगह रे छिडा हिचंती. सेइत पई से कोन करला ता बेल को बारंबार शेक कला. ए घंटी रे बेको पाखरे जे घंटीटा लागि थाए एनिमल रो हॉर्स रो कि जे कोनसे एनिमल रो से सेटा को शेक करी कि कोन करला गुटे इंडिकेशन दवा को चेष्टा करला काहा को तारो ओनर को. सेटा ही से क्वेश्चन रे पचरचे कोन सेटा ही क्वेश्चन रे पचरचे कोन व्हाई डज द हॉर्स gives his harness bell a shake. Why? The question is why? काहे की से घोड़ाटी तारो बेल टाकू कोन एम्ति शेक करूथुला. So the answer is
matter. So students, yesterday I already told you the meaning of the query is strange or odd. Amaro kono ama horse kon heitla से काहे की तरह हार्नेस बेल्ट को शेक करथला कोन पई द हॉर्स थॉट द पोएट स्टॉपिंग इन द वुड्स एज अ क्वील मैटर माने हॉर्स को लागुथला जे किछि गोटे तो समथिंग इज स्ट्रेंज काहे कि मो ओनर एठी छिडा होचंती तापरे कोन हेची सो द हॉर्स गेव हिज हार्नेस बेल अ शेक टू गिव एन इंडिकेशन टू द पोएट कॉमा इफ समथिंग इज एरर कोन हेची हॉर्स कोन करथला तार बेल को शेक करिके काहे कि से शेक करथला क्वेश्चन टा एटी सीट में पचरा अछि काहे कि ना सी तार ओनर को माने हम पोएट को पचारे को चेष्टा करथुला जे कोन हे जी तमे एठी कोन पय छिडाय छ किछि भूल अछि कि इज देयर समथिंग मिस्टेक इज देयर समथिंग एरर दैट इज द रीजन आई एम शेकिंग माय बेल टू गिव यू एन इंडिकेशन जे व्हाई यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर इंडिकेट करू छी किए हॉर्स इंडिकेट करू छी का थ्रू रु करू छी ता बेल थ्रू रु करू छी जेटा बेकरे लागि छी ताको शेक करी कि ता ओनर को माने हम पोएट को किछि जत्तेबा को चेष्टा करू छी किछि इंडिकेट करे को चेष्टा करू छी काहे कि बिकॉज़ ही इज अ एनिमल ही हैज नो फीलिंग्स ही हैज लाइफ बट ही हैज नो फीलिंग्स से कोन करे को चेष्टा करू छी सी हमरा पोएट को जतेबा को चेष्टा करू छी तार बेल को शेक करी कि जे मालिक काहे कि तमे एटी कोन पे छिडा हलो व्हाट इज द मैटर किछि भूल है छी कि So students, coming to the last question of this session, that is, look into your book. The question is question number 6. What is the only other sound besides that of the harness bell? I repeat, what is the other sound besides that of the harness bell? माने एठी हमको क्वेश्चन रे कोन पचरा हेची जे हॉर्स रो जे बेकर जे घंटाटा लागितला तारो टिंकलिंग साउंड को छाडी की अपार्ट फ्रॉम दैट what is the sound, what is the other sounds what the poet is able to hear? So the answer is full stop. Apart and besides that, the poet could also hear and feel the sound of the soft snow falling downwards. So छुआ मैंने रिकॉल करो मु तुमको कहि थिली जे हार्नेस बेल रो साउंड अपार्ट रे आमो पोएट दीटा आउ साउंड सुनिबा को पाउचंती कोन गुटे होची ड्राउनी फ्लेक रो साउंड आउ गुटे कोन सॉफ्ट स्नो फॉलिंग डाउनवर्ड्स तळळ को जे स्नोटा पडची. सो ए क्वेश्चन रो आंसर रो माने कोन द पोएट हर्ड द साउंड ऑफ द हार्नेस बेल ऑफ द हॉर्स माने पोएट हमरो सुनिबा को पाउथिले कोन से हार्नेस बेल रो साउंड अपार्ट एंड बिसाइड्स फ्रॉम दैट ताकू छाड़ी की मध्य कोन पोएट फील करूथले फील करले सिना सुनिबे. सो फर्स्ट फील कोन करले फील आ सुनिले कोन द साउंड ऑफ द सॉफ्ट स्नो फॉलिंग डाउनवर्ड्स. पिला माने तमे देखिथिबो स्विट्जरलैंड रे कि लद्दाख रे जेमति स्नो फॉल हुए सेतबेले गुटे स्नोई ब्रीजी गुटे साउंड हुए सेही साउंड टाकू आमो पोएट फील करूथले ए पर्टिकुलर सिनेरियो रे.
एठी मु तुमको गोटे पॉइंट कहबा को भूली जाइथिली पॉइंटटा कोन देखो छुआ माने क्वेश्चन रे तुमको कोन कुआ हिची कोन पचरा हिची व्हाट इज द ओनली अदर साउंड besides that of the harness bell. See here it is written sound. Okay, so there are, as we were going through the poem, we heard that there is two sounds, but here I felt that the most important part is soft snow falling downwards. तमे चाहिले दीटा पॉइंट दीटा साउंड को भी इंक्लूड करके लिखि परिबो सेटा रे भी तुमको मार्क मानिबो बट जदी तमे चाहू जे ना जेहेतु एटी साउंड को है जी if the question is coming like sound then you explain one point and if also you are explaining 2 points then there is no burden, you will get the mark. So kon mu likhili the poet heard the sound of the harness bell of the horse माने कोन आम पोएट कोन सुनिथिले सी केवल सुनुथिले कोन the sound of the harness bell ताकू छाडी के आउ कोन दीटा साउंड सुनुथिले दीटा साउंड थिला फर्स्ट साउंड कोन थिला देखो एटी पैराग्राफ नंबर 3 रे अछि कोन पैराग्राफ नंबर 3 रो थर्ड लाइन रे कोन अछि देखो टिके फोकस करो पॉइंट कोन अछि the only other sounds देखो एटी साउंड्स अछि सेत में दीटा जिंसो एक्सप्लेन पोएट हमर करिसंती कोन easy wind and drowny flake टाकू मु इंपोर्टेंस दे के एठी लिखिछि तमे जदी ता जगह रे दुईटा पॉइंट लिखिबो ताने भी you will no doubt get marks. So the कोन थिला आमे कोठी थलु ए थर्ड पैराग्राफ रो थर्ड देखो लाइन रे कोन लिखा छि the only other sounds that sweep माने जेटा बही जाउ जेटा मूवमेंट करूछि कोन of easy wind and drowny lake. So coming to the explanation आमे कोठी थिले apart and beside from that माने harness bell रो साउंड को छाडी दे कि आउ जो साउंड ता चालू थला जेटा पोएट हमर सुनिबा को पाउथिले कोन the poet could also hear and feel से feel करले से hear करबो आगे से feel करिछि कोन feel करछि the sound of the soft snow falling downwards जेटा कि हमें drowny flake बोली कहूछु एटी काहे कि मु गोटे जिंस एक्सप्लेन कली बिकॉज़ क्वेश्चन रे देखो लिखा हिछि साउंड सेति पई मु गुटिया जिंस को इंपोर्टेंस दे कि एक्सप्लेन करछि अगेन रिपीट करछु जदी तुमे दीटा जिंस भी एक्सप्लेन करि दउछ इन फॉर इंस्टेंस देन आल्सो यू विल बी गेटिंग मार्क्स देयर विल बी नो माइनस मार्क्स एंड अनदर वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू please focus on your handwriting because I have seen maximum while checking like board papers the handwriting is so miserable that it is very difficult for us to understand कि तुम लिखिचो कोन सब बेले पेन टाकू स्ट्रेट धरिबो एंड ट्राई टू राइट स्ट्रेट एटा मोर मध्य प्रॉब्लम थिला आई वाज आल्सो अनेबल टू राइट स्ट्रेट इन द बोर्ड बट यू नो practice makes a man perfect. So this is the only tip I would like to tell you. Please focus on your handwriting and full stop. Full stop is also a main thing because full stop ends a sentence. If you are not ending a sentence, the examiner will not be able to understand that where is your sentence ending and if taro like if she is wanting or he is wanting to cut your marks, he or she can easily deduct your half mark without any reason. So I would like to request you and advise you to go through all this question answer whatever I have taught you in this session so that you could be able to understand each and every question and the answer. If you have any doubt, you could easily comment in the comment box which is provided in the channel so that it would be easy for me to understand कि कोठी तमर प्रॉब्लम होची कि को जगह तमे बुझी पालनी so that next time मु सेटा को तुमको आहुरी एलाबोरेट आउ ताकू एलाबोरेट करी कि लाइक तुमको बुझेबा को मु चेष्टा करबी. So hope this session is like helpful to you and like thank you. Have a nice day.